I'm very happy to announce that I scored a full 30 on 30 in my SBI PO interview, sir. I have no shame in admitting कि मैंने 10th standard की basic से math start किया. When I was like what? I was a 25, 26-year-old person learning basic maths again from 10th standard. I used to sit in office and back in my office and I used to learn कि tables याद कर लेते हैं, squares and cubes याद कर लेते हैं. You know, that was a journey that I will always remember. You know, mugging up the facts and just putting everything. I was not in the rectification thing. I had some clarity in mind. आप मॉक्स दो एंड ऐसा नहीं है कि आप मॉक्स देके सेकंड पे भर जाओ. पहला वाला दो, उसको एनालाइज करो, go back again and understand कि what was the issue, where did we went wrong. Did more number of questions into quant than I did into reasoning. Hello everyone, welcome to Oliveboard. I am your mentor प्रबल लवानिया और आज हमारे साथ हैं श्रुति गुप्ता जिन्होंने क्वालिफाई किया है SBI PO 2025. Hi Shruti. Hello sir, how are you? Fine. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for the wishes, sir. सबसे पहले तो ये बताइए घर वालों का रिएक्शन क्या था SBI PO 2025 का जब फाइनल रिजल्ट आया और आपने रिजल्ट चेक किया तो क्या रिएक्शन था सबका? Honestly, sir, everyone was very happy. They were over the moon that because SBI is a prestigious brand, to get selected into such a big exam is an achievement for sure. Everybody in my family was very happy. They were very joyous, and it was a fun day to celebrate. थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या मतलब ग्रेजुएशन में किया हुआ है एंड आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है मतलब जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए. तो सर आई हैव कम फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और ग्रेजुएशन में आई हैव डन BSc इनटू जूलॉजी एंड बॉटनी. उसके बाद I went to give MBA exams and I did my MBA into marketing and human resources. I worked 3 years into corporate sales and then I switched to banking. When it comes to banking, I already have like 18 months of experience. I work as a scale 1 officer in Punjab National Bank. When it comes to my family, no sir, there is nobody in the government sector here. I have 2 elder sisters and both of them are chartered accountants. So they're working with MNCs and my father is a businessman, my mother is a homemaker. For me, the government job preparation came as an idea when I was working into sales. Sales was quite hard for me. I used to look and then I finally figured out that if I want to do this, let me get into banking and at least I'll have a secure job, I'll have a good future. That is when I decided that, I want to go towards the banking segment. अच्छा, एक जो आपने बताया कि ग्रेजुएशन में आपने BSc करा हुआ है ना, आई थिंक जूलॉजी बॉटनी से आपने किया हुआ है, तो कितना हार्ड था कि एक साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बैंकिंग के लिए जाना और फिर उसके बाद SBI PO जैसा एग्जाम को क्वालिफाई करना? Hard तो बहुत था sir, because I was honestly that student who used to shy away from quants, from maths. I had a very big fear when I was in 10th, 12th standard, which is why मैंने 11th और 12th में biology choose किया instead of maths. I went for NEET, gave my attempts, and eventually did my MBA. So, because we all know that SBI PO is quite a tough exam. The quant section is almost at par with CAT exams. So, उसके लिए, making myself prepare for that was a tough task. But I think I was able to do that. That helped me a lot. अच्छा, एक चीज और, ऑलरेडी आप PNB में मार्केटिंग ऑफिसर ऑलरेडी थे एंड आफ्टर दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर द SBI PO एंड देन यू क्वालिफाइड इट. क्यों, मतलब ऑलरेडी आप वर्किंग थे बैंकिंग में, तो उसके बाद आपको SBI PO के लिए प्लानिंग कैसे, मतलब क्या रीजन था इस चीज का? Sir, my job in PNB is quite nice. It's because Punjab National Bank is a prestigious institute as well. Okay. But most of it entailed into the sales and the field part of the job. Because I was into sales before and I was still doing it 18 months into the job. Then I looked at my peers into the banking industry. And I realized that I want to go towards a more holistic banking approach. See, जब आप already India's second largest national bank में काम करते हो, the next step is always to go on number 1. For me, number 1 comes at SBI. So I decided that this is the right approach. Let us get into SBI PO. And obviously PO ka exam is quite hard. It's quite tough. So it takes a lot of preparation, lot of effort.
and to do it with a full-time job where you have to be out into the field and into the into the branches, into the bank 9 to 10 hours a day was a task. But I'm grateful to everyone and to my teachers, to my mentors, that I was able to do it. Okay, when you started your preparation, I think in 2023 you started your preparation. कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आपको लगा कि मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? और क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसा आपने बताया कि 3 साल आप जॉब करके आ रहे थे, तो उसके Hmm. बाद बैंकिंग के लिए स्टार्ट करना प्रिपरेशन, और एक सबसे अच्छी चीज ये है कि 2023 में ही आपने पीएनबी आईबीपीएस एसओ क्वालिफाई कर लिया था। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पे आपको लगा कि थोड़ा कमांड बनाने की जरूरत है? और क्योंकि एसओ है, तो क्योंकि आप 3 साल जॉब करके आ रहे थे, तो Hmm. डेफिनेटली वो एक सेल्स वाला पार्ट जो एसओ में आपको कहीं ना कहीं चीजों में आपको हेल्प हुआ होगा। बट बाकी कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें आपको थोड़ा सा लगा कि मेहनत करने की जरूरत है? राइट, तो ऐसे दो मेजर सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए सर. वन वाज क्वांट एंड द अदर वाज जनरल अवेयरनेस. General ओके। awareness was something that I used to put a lot of effort in. I heard from mentors, I went on YouTube, and then I eventually figured out that general awareness gives you the maximum marks. ठीक है. Maybe कहीं आप reasoning English में पीछे रह जाओगे, but if you have a very strong GK, you will definitely succeed. So that was one subject that I put maximum effort into. The second was quant. So these two helped me, these two, I worked a lot on these subjects and eventually was able to clear this exam. एसबीआई पीओ के लिए जब आपने तैयारी शुरू करी होगी, जॉब के साथ ही आपने तैयारी शुरू करी, Hmm. तो कैसे टाइम मैनेज करा? मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो लोग ऑलरेडी वर्किंग होंगे, एंड दे आल्सो प्लानिंग कि हम लोगों को 2026 के लिए तैयारी करनी है। तो टाइम मैनेज कैसे किया आपने? क्योंकि एसबीआई पीओ जैसा एग्जाम, और ऑलरेडी आप इतना एक टाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे थे, तो कैसे आप लोगों ने आपने चीजों को मैनेज किया? For me, sir, I planned my day accordingly. I used to get up early in the morning. सुबह के 2-3 घंटे I used to give to mocks. And then obviously आप job से आके थक जाते हो and you feel very tired. So in the end, I just used to go through the daily videos of what has the mentor told us. I used to follow Sheetal ma'am. She is an educator from Oliveboard, and I used to look at her daily GK classes. She used to bring all these daily current affairs classes. तो हम्म। उनकी क्लासेस में रोज रात को कर लेती थी सो दैट आई कैन कवर अप द होल डे, कि एटलीस्ट मेरा जीए वाला पोर्शन वहां पे कवर हो रहा है. And then ओके। towards the end, towards the weekend, when I have a Sunday off or a Saturday or Sunday both off, then I used to dedicate all of those 2 days to mocks. Mocks were all I could think about, and I used to give a lot of mocks. दिया and then उसको analyze किया. They were in the beginning, they were days जहाँ पे prelims में भी अच्छा score नहीं आता था mocks में. But then I used to go through the video lectures. I took the Oliveboard mock series both for prelims and for mains. And I took that because I felt कि मेरे लिए olive board के marks were at par with the difficulty that was given in the exam. We know कि recently last 2 attempts से ही SBI ने अपना पूरा pattern change किया examination बिल्कुल। का. उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ भी इनेबल किया. तो फॉर मी दैट हेल्प अ लॉट. मॉक्स देना, फिर मॉक्स को स्टडी करना, सारे वीडियो लेसन जाके देखना, उसके सॉल्यूशंस देखना. And that is how I used to plan, like 2-3 hours a day on weekdays, then another 8 to 9 hours for weekends. अच्छा, एसबीआई के लिए स्पेशली अगर हम पीओ के लिए बात करें, तो प्रीलिम्स के लिए तो मेरे को लगता है आपने, क्योंकि एग्जाम्स ऑलरेडी क्वालिफाई करे हुए हैं, तो Hmm. प्रीलिम्स के लिए आपने स्पेशली सिर्फ मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया होगा, और वहां से जी. आपने एक प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया। बट मेंस के लिए आपने कैसे मैनेज किया? मेंस के लिए रीजनिंग का सेक्शन हुआ, क्वांट हुआ, जीए स्पेशली। So, I mean, beginning with GA, I started going through the daily current affairs. उसके लिए मेरे पास दो ही sources थे. Either I used to go through Sheetal ma'am's daily current affairs, or I used to follow a newspaper. I had a newspaper at home. Okay. Daily सुबह उसे कर लिया. Actually, newspaper helps us a lot. वो आपको आपका जो descriptive portion होता है उसको लिखना सिखा देता है. Recent topics cover करवा देता है. और बाकी सब जो आपका जो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो आपको टीचर्स कवर करा देते हैं. तो मैम यूज टू ब्रिंग अस कि आरबीआई मंथली सेशंस वो लेकर आते थे, बैंकिंग न्यूज लेकर आती थी वो. दैट हेल्प मी अ लॉट वहां पर.
तो जीए मैंने ऐसे कवर किया पूरा। आई थिंक आई डिड लास्ट 8 months ऑफ जीए फॉर एसबीआई. Towards the end, जब I had 15 days remaining for my mains exam, then I took that Oliveboard. They had released an 8 months whole MCQ series. They were on 1500 MCQs, and you would not believe me, sir. Maximum questions I could able to clear because I had actually learned those MCQs step by step. लास्ट ओके सितंबर में क्या आया था, जुलाई में क्या आया था, अगस्त में क्या आया था, कंबाइन ये तीन चीजें कंबाइन करके आई वाज एबल टू क्लियर जीए. These were the only three sources I kept in. And then when it comes to reasoning and quant was something that I did completely on mocks. लास्ट ईयर के सारे सिलेबस कर लिया, सारे पेपर्स फॉलो कर लिए. एंड देन जितने भी मॉक्स थे, एंड लाइक यू नो, we have this on olive board with a difficulty pattern is also defined from moderate, easy, difficult. I बिल्कुल. started with easy, then I skipped that. I felt that कि ये नहीं आएगा, ठीक है, and then I gave maximum approach to moderate and difficult mocks. When I was done with all the 10 mocks that were moderate, I switched to difficult. And at the end, one very important thing I would like to mention was the descriptive portion that the Olive Board had given me in the series. They gave us all the things like Pressy writing, email writing. They gave us, report writing, letter writing, बिल्कुल. and I used all of those resources. The evaluators judged my responses, and they actually gave me very good insights on how can I improve my descriptive portion and what are the other things I could add. So combined to all of this, I think it helped me in clearing mains. मतलब 2025 में आपने एक ही एग्जाम दिया एसबीआई पीओ ओनली, या फिर और भी एग्जाम्स आपने दिए? I did attempt the UPSC CSE this year, sir, but unfortunately, I was not able to clear the prelims. ओके. So these two exams only ओके, I gave. that means you are 100% sorted that I have to go for SBI PO only. I am 100%, sir. ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, जब आपने तैयारी शुरू करी थी बैक इन 2023 की अगर हम बात करें, तो मॉक टेस्ट वगैरह जब आपने देना शुरू करा होगा, एक इनिशियली स्टार्ट करा होगा, तब क्या मतलब आपने चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में मार्क्स इतना गेन नहीं हो रहे होंगे. सो हाउ यू मैनेज्ड योरसेल्फ एंड कैसे आपने मोटिवेट किया अपने आप को कि नहीं मेरे को करना है? क्योंकि अब एक आपका बैकग्राउंड अगर मैं देखूं तो वो उस बैकग्राउंड से बैंकिंग की तरफ आना, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं, आपने भी ये सुना होगा कि बैंकिंग हुआ या एसएससी हुआ, ज्यादातर इंजीनियर हैं जितने भी जिनका मैथ्स Hmm. अच्छा है वही लोग कर सकते हैं, मतलब. लेकिन आपने वो मिथ को पूरे तरीके से वैनिश आउट कर दिया. Back in 2023 also, sir, when I gave as IBPS SO, तब भी एक इशू था मेरे साथ that I used to score decent marks into reasoning, good marks into English, but then always quant was an issue. तो उसको चैलेंज आउट करने के लिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया. आई मीन आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि मैंने 10th स्टैंडर्ड की बेसिक से मैथ स्टार्ट किया. व्हेन आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज अ 25-26 year old person learning basic maths again from 10th standard, and then eventually moved on to the tougher questions. There were times जहाँ prelims के marks में I used to score 30 में से 5 या 30 में से 4, and eventually that score increased. I remember SBI PO prelims, I scored around 80 out of 100, and that was an achievement for me. कि because I was pretty sure कि English हो जाएगा, reasoning हो जाएगा. जो सबसे ज्यादा आपको मतलब आपको जिससे डर लगता है वो मेरे लिए मैथ्स था. तो उस डर को मैंने ओवरकम किया है, ठीक है. आई यूज टू सिट इन ऑफिस एंड बैक इन माय ऑफिस एंड आई यूज टू लर्न कि टेबल्स याद कर लेते हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लेते हैं. एंड यू नो, दैट वाज अ दैट वाज अ जर्नी that will I will always remember, from a science background, then coming to commerce and then giving banking exams was quite a wholesome thing for me. एक चीज और, जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया, Hmm. आफ्टर दैट आपने एमबीए किया, ठीक है, तो जब आपने जीए वाला सेक्शन तैयार किया, जब आपने सारी चीजों को पढ़ा होगा, तो कुछ जो चीजें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, जो चीजें आप करके आए, उससे कुछ फायदा मिला जीए में, इकोनॉमिक्स के Uh, टर्म्स में या फिर कहीं पे? स्टैटिक जीए इज समथिंग दैट जो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी पढ़ाई किया फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल हियर, वहां से बहुत कुछ कवर हुआ. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन वहां से आया.
इकोनॉमिक्स का पोर्शन वहां से आया, ठीक है। इफ योर बेस फॉर द स्टार्टिंग जीए इज क्लियर, तो आप करंट अफेयर्स याद कर पाना आसान हो जाता है आपको, तो आप एक्चुअल समझ पाते हो कि न्यूज में क्या चल रहा है। एंड व्हेन इट केम टू एसबीआई पीओ, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस। 18 महीने मैंने पीएनबी में काम कर रखा था, मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस था, बैंकिंग के टर्म्स की नॉलेज थी कि अगर लेट्स से एक्स वाई जेड बैंक हैज रिलीज समथिंग, तो मुझे पता था कि इसके पीछे क्या होता है। दैट हेल्प मी, दैट गेव मी अ पॉजिटिव एज maybe to above other aspirants, because when I was doing the GA portion and when I was doing the banking awareness session, banking awareness GK wala stuff, then I knew that what does this terminology mean. I was not just mugging up the facts and just putting everything. I was not doing the rectification thing. I had some clarity in mind. So आप जहां से भी आते हो, जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, एटलीस्ट आपका स्टैटिक वाला पोर्शन वहां से कवर होता है। बिल्कुल। एंड देन अगर आप कंसिस्टेंसी बना के चलते हो, then it will always help you clear exams, I think. इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, स्पेशली फॉर द एसबीआई पीओ अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एसबीआई पीओ का है। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, एक कहीं ना कहीं एक मिथ भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं डर भी बोल सकते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं या जिनका एक इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, उन लोगों के लिए क्या चैलेंज है अगर वो एसबीआई पीओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं? और स्पेशली इंग्लिश सेक्शन जो है, कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ का अच्छा आता है, एक फाइनेंस ओरिएंटेड पैसेज वगैरह मिलते हैं, तो कैसे तैयार करा जाए इंग्लिश का पोर्शन? सर देखिए, हर एक एग्जाम में देर आर वेरीड पीपल फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स, ठीक है। बिल्कुल। आई वॉज समबडी जिसके लिए मैथ्स इशू था, देर आई थिंक देर वुड बी पीपल जिनके लिए इंग्लिश एक इशू हो सकता है। बट देन यू नो स्काई इज द लिमिट इफ यू डिसाइड कि ये करना ही करना है। फॉर देम आई कुड मे बी गिव एन एडवाइस कि स्टिक टू वन थिंग, maybe grab a newspaper. There are still, a couple of months left for SBI PO, and we are expecting huge number of vacancies this year. So I would suggest grab a newspaper, start going through it. आपका इंग्लिश भी प्रिपेयर होता है, आपका जीए भी प्रिपेयर होता है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिलाई ऑन मॉक्स। आप मॉक्स दो, एंड ऐसा नहीं है कि आप मॉक्स देके सेकंड पे भर जाओ, पहला वाला दो, उसको एनालाइज करो, गो बैक अगेन एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द इशू, वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग। फॉर मी आई फील कि स्टार्टिंग में स्पीड सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आप जब तैयारी शुरू करते हो तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, एंड एसबीआई जैसे एग्जाम में स्पीड से ज्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी। I बिल्कुल। could have attempted 150 number of questions, marks, but then I chose not to do that, because मेरे लिए important था कि अगर मैं 30 में से 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आती हूँ इंग्लिश के, तो वो 25 के 25 एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ हों। ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि यहाँ पे जंबल अरेंजमेंट है, यहाँ पे पजल है, तो आपको बस आंख बंद करके लगाते जाना है। एक्यूरेसी इज व्हाट मैटर्स। आप धीरे धीरे बिल्डअप करते हो इंग्लिश में, एंड देन you eventually find a stage where you feel कि questions have started repeating themselves. Same question repeat नहीं होता, but then the pattern is something that you understand. The more number of questions you do, the more number of mocks you do, and the better analysis you have. That's when you understand how to tackle questions. I mean, this was a strategy that I kept for all of my subjects, but I think this works everywhere, whether it's English, whether it's quant, reasoning, or GA. I feel the strategy works. अच्छा, ऐसे कौन से दो सब्जेक्ट हैं, मतलब स्पेशली फॉर द एसबीआई पीओ के लिए अगर मैं बात करूं, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत लगती है जिनको तैयार करने में, फॉर द एसबीआई पीओ मेंस, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए, जिनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को मेहनत चाहिए? I feel that GA is one of them. Recently, जो pattern change हुआ, उसमें SBI is now asking 60 questions of GA. And English का तो सर weightage भी कम हो गया है. कम It हो has गया है। now went down to 0.5 marks. ठीक है, तो I feel focusing best on GA, and maybe then it's a combination of reasoning and quant. ठीक है, आप क्या अच्छा कर पा रहे हो. But for me as a personal opinion, I would give that quant and GA is something that is very crucial. ठीक है, 60 मार्क्स का दोनों आता है। यू कैन स्कोर अ वेरी गुड, हैव अ वेरी गुड स्कोर अगर आप दोनों अच्छे से रेडी करके जा रहे हो। तो एट द एंड जब जैसे जो क्वांट का आपका फियर था, जब आप एसबीआई पीओ मेंस देने गए, तो वो एक कॉन्फिडेंस आया होगा, मतलब मॉक टेस्ट इतने दिए, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में कन्वर्ट हुआ? बिल्कुल हुआ सर। आई यू बी सरप्राइज टू नो आई अटेम्प्टेड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनटू क्वांट देन आई डिड इनटू रीजनिंग। एंड आई मतलब मुझे वहां एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के डर था, पता नहीं एक भी नहीं हुआ तो क्या होगा।
एंड देन स्टार्टेड डूइंग इट, सेट्स बनते गए और फिर वो होता गया। इवेंचुअली थोड़ा टाइम निकलने के बाद समझ में आया कि अब हो जाएगा, बिकॉज आई हैड दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट। इतने सारे क्वेश्चंस करके मॉक्स लगा के मुझे पता था कि ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे निकलता है। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड मतलब समझ में आया कि हाँ, दिस इज डूएबल। If somebody from me who came from a science background can, clear this background, clear this exam, then people coming from commerce, people coming from engineering, in fact, I've seen, interviews with Oliveboard, that people say have come from IITs and NITs, and they have cleared SBI PO. So I feel, great pride knowing that I was one of them who was able to do it. Now let's talk about the interview part. How was the experience? The experience for interview was entirely one of the smoothest of all in the three stages of exam. And my interview was in New Delhi. And Okay. I think it was in the first shift. There were a panel of four people. And the whole interview lasted around 10-15 minutes. But then maximum questions were from my job background. Because मैं पहले से banking से आती हूँ. तो उन्होंने Definitely. पूछा मुझसे how do you plan your day? What is, and there were some static questions as well, RBI से related, repo rate से related. And there were questions where maybe they tried to frame you. I remember at that time, the repo rates were not revised. But one of the panelists asked me that, there's a meeting going on with the RBI officials. Can you tell us what is the new repo rate? Which is when I understood कि नहीं ये फंसाने वाला question है, ठीक है? There is no change. The next meeting would happen in December. It has not happened yet, and those were the days of November 25. So yes, those were the questions. I was a bit scared from the, when I entered the interview panel. But all of those four people made me very comfortable. They were actually happy that I was coming with experience from a banking industry. They said, ki, okay, we are happy that we're getting somebody who has the experience of getting business for bank, because I work in sales and marketing. So that helped me a lot. Plus, before I actually went to give the interview, I saw a lot of mock interviews on Oliveboard's YouTube platform. Last year's interview, then this year's mock interview, and then I also took tips from different mentors. Like I said, one of the mentors from Oliveboard that I follow is Sheetal ma'am. Okay, she used to put up latest circulars of RBI, latest PIBs, Mhm. so that we can go through them. That eventually helped me, and I'm very happy to announce that I scored a full 30 on 30 in my SBI PO interview, sir. अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि why you want to go from PNB marketing officer to SBI बिल्कुल PO? था, sir. This was the first question that they asked me. That why do you want to, because you're already at a scale one officer. Why do you want to come into SBI again as a scale one officer? And I gave them the exact same answer that I gave you, sir. Everybody wants to go to number one. Going from number two is number one. That is what matters to me a lot. And SBI by default is a prestigious institute. I wanted to get into the holistic banking, and because I know the sales part of it, the business part of it. So I wanted to get into the operations part of banking. They, I think, spent 2-3 minutes on that question and eventually moved on to further questions from me. ओके, टेल मी, जो आपने ओलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट दिए, वीडियोस देखे, Hmm. ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब about the content, about the level of the questions regarding prelims and mains. Like I mentioned before, sir, कि Oliveboard is one that platform जो बिल्कुल एट पार क्वेश्चंस लेके चलता है एसबीआई को लेकर, ठीक है। एसबीआई का एग्जाम आईबीपीएस से टफ होता है, और इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैट। तो ऑलिव बोर्ड की मुझे एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज इसलिए लगती थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होते थे और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते थे। देवर इन द बिल्कुल। मॉडरेट रेंज, देर वर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। मैंने मॉक दिया, फिर उसको एनालाइज किया। पहले जो क्वेश्चंस के आंसर बाय डिफॉल्ट होते थे उससे एनालाइज किया, फिर वहां पे वीडियो आंसर भी होते थे, उसको भी हम्म। खोला। मे बी द एजुकेटर इज टीचिंग समथिंग जहां से मुझे एक नया अप्रोच मिल जाए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे मेरे लिए रीजनिंग के और क्वांट के जो मेरे लिए अलग थे, लेकिन फिर मैंने जब वो वीडियो लेक्चर्स देखे तो मुझे समझ में आया कि ओके, दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच जहां से क्वेश्चन को इजी तरीके से किया जा सकता है। तो वहां से मुझे एक डिफरेंट अप्रोच मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर मेंस के लिए व्हाट हेल्प वाज कि आई फेल्ट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी करती थी, ठीक है। इन द एंड ऑल आई डिड वाज लास्ट में सब कुछ छोड़ के आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द जीए मॉक्स कि भाई ये कर लो। जीए हेल्प मी अ लॉट, एंड देन
the best part was a descriptive series. Okay. Descriptive में the type of evaluations I got helped me in the actual exam for descriptive. कहीं Okay. मैंने शायद कुछ टेंस का गलती कर दिया या वर्ब की गलती कर दी, तो that was pointed out, and they actually gave me different approaches to write. I wrote a line, and they gave me how can I twist that line into something better. So that helped me when it came to Oliveboard. Any suggestions that you want to give to those students who want to prepare for 2026 banking and insurance exams? The best I could say is be consistent with whatever you are doing. Consistency is what takes you to the other side of the Okay. room. Take one approach and stick to it. And also, I would suggest if you are a beginner, to try and take a good mock or test series, or just take a full-on course. See, sir, I believe that if I was a beginner, if I had zero experience into the banking sector or the mock test series, or I would have eventually gone for that the full-on course. And you'll be surprised to know, even when I prepared for that PNB Marketing Officer exam, I did take a full-fledged course from Oliveboard for that SO thing, because the paper that came, it came from a marketing approach, the mains exam that was there, and I felt कि सिर्फ किताब पढ़ने से आप नहीं हो पाते. I went through बिल्कुल. all the lectures that I had taken, and I was able to do it. I believe always take one coaching and stick to it. And this is the, advice that I would give to my peers going ahead. Okay. And now, what next after SBI PO? Do you want to prepare for the further RBI Grade B or SEBI? I think RBI Grade B is something that I have in the back of my mind. Okay. But for me, right now, I'm settling into SBI PO. Okay. And this is something that I would like to go ahead in life with. Thank you, Shruti. Congratulations once again. Thank you so much, sir. Thank you for the valuable time and this interview. Thank you. Thank you so much.